Hi everyone, welcome to Tadhagat. A very good afternoon. एंड आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम कैट के PYQs करने वाले हैं LRDI के, और जो भी हम सेट्स करेंगे कभी ना कभी कैट के अंदर आए हुए हैं. सो ये हमारे सामने एक पहला सेट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस. हमें पता है कैट में ग्रिड टाइप सेट्स काफी आते हैं LRDI के अंदर. सो दिस इज वंस अगेन अ मैट्रिक्स, 3 4 x 4 मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमें कुछ नंबर्स को फिल करना है. सो विल बी सॉल्विंग दिस सेट. सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो इफ यू लुक एट दिस सेट नाउ, ये क्वांट बेस्ड रीजनिंग का सेट है. इस साल भी हर एक स्लॉट में देयर वाज अ सेट रिलेटेड टू क्वांट बेस्ड रीजनिंग जिसके अंदर थोड़ा मैथ्स यूज रहता है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, 16 consecutive natural numbers are to be filled into a 4 x 4 square matrix, such that there is one number in each of the matrix, not necessarily in any order. A few of these 16 numbers are already shown in the boxes. Remaining 12 numbers are denoted by 12 alphabets A to L. The numbers are filled in the boxes in such a way that sum of the numbers in boxes of any row, any column, and any diagonal of the square matrix is the same. तो सम हर जगह से सेम आना चाहिए, सम हर जगह से सेम आना चाहिए. इट इज ऑल्सो नोन दैट d प्लस ई प्लस आई इज इक्वल टू 60. ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट. यहाँ पे 16 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फिल करने हैं ना. देखो मुझे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है. और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा दिखा रहा है, 28. 13 से 28 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 13 से 28 के बीच में 16 नंबर्स होते हैं. और यहाँ पर 16 नंबर्स के बारे में ही बात की जा रही है. मतलब हमें समझ आया कि यहाँ पे 13 से लेके 28 तक फिल करना है. सो दीज आर द नंबर्स दैट वी नीड टू फिल हियर. 13 14 15 till 28. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. So these are the numbers that are needed to be filled in this grid. सम हर जगह से सेम आना चाहिए, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स सी. देखो यहाँ पे रो को चेक करो, रो. सो अगर आप इस रो को देखो तो यहाँ पे इन 4 नंबर्स का सम मान लेते हैं कुछ ना कुछ है, लेट्स से x सम. तो अगले 4, ये वाली इस रो का सम भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर एक रो का सम सेम रखना है. तो देखो यहाँ पर x है तो इधर भी x, इधर से भी क्या होगा x, इधर से भी क्या होगा x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर एक रो का सम सेम होना चाहिए. तो इस x के अंदर कितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 4 नंबर्स. इसके अंदर 4, इसके अंदर 4, इसके अंदर 4. तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या बनेगा, 4x. हमारे पास क्या बनेगा, 4x. सो 4x क्या है, 16 नंबर्स का सम है, क्योंकि एक x के अंदर 4 नंबर्स ऐड हो रहे हैं. तो 4x के अंदर 16 नंबर्स ऐड हो रहे हैं. अब 4x क्या है, 16 नंबर्स का सम. ये 16 नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, ये 16 नंबर्स वही नंबर्स है जो यहाँ फिल हुए होंगे. मतलब 13 से लेकर 28 तक, 13 से लेकर 28 तक, इन सब का हमें सम करना है ना. 13 से लेकर 28 तक तो बहुत इजी है इनका सम करना. आप देखो 13 से 28 ऐड करना है तो 13 इंटू 13 प्लस 28, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करो, कितना बन रहा है, 41. 14 एंड 27 कितना बन रहा है, 41. तो इक्वी डिस्टेंट टर्म्स को आप ऐड करोगे तो 41 41 बनता रहेगा. कितनी बार बनेगा, 16 नंबर्स है तो 8 पेयर बनेंगे 41 के. दोबारा से 13 एंड 28 41, 14 एंड 27 41, 15 एंड 26 41, 16 एंड 25 41. तो 41 कितनी बार बनेगा, 8 टाइम्स. तो ये हो गया आपके पास है ना, 4x क्या है, सम ऑफ 16 नंबर्स सब, और 16 नंबर्स का सम किया तो ऐसा है. तो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 82. तो हमें पता चला कि यहाँ पे हर जगह से सम मुझे कितना बनाना है, 82 सम बनाना है, 82 सम बनाना है. ठीक है, और हमें नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं. हर रो का, हर कॉलम का, हर डायगोनल का सम कितना होना चाहिए, 82. राइट. तो अब देखते हैं कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं. सम इज 82. राइट.
तो आप सबसे पहले ये नोटिस करो, हमें एक क्लू गिवन है d प्लस ई प्लस आई 60, d प्लस ई प्लस आई 60 है। डायगनल का सम कितना होना चाहिए? 82 होना चाहिए ना। इफ यू लुक एट दिस डायगनल, इसका सम भी क्या होना चाहिए? 82 होना चाहिए, 82, जिसमें से मुझे 28 और 13 दिखाई दे रहा है। तो कहना है इसे डी प्लस आई विल ऑल्सो बी 41। 28 एंड 13 इज 41, तो 41 में 41 ऐड करूंगा तब 82 होगा। तो हमें पता चला डी प्लस आई कितना होगा? डी प्लस आई इज 41। ओके, अब डी प्लस आई अगर 41 है, चेक करो, डी प्लस आई अगर 41 है तो ई कितना होगा? 19। तो सबसे पहले हमें ई की वैल्यू पता चल गई जब हमने ये वाला डायगोनल देखा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? डी प्लस आई इज 41 एंड ई की वैल्यू इज 19। ई की वैल्यू इज 19। तो चलो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 19 और डी प्लस आई कितने? 41। राइट। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का हम जब सॉल्व करते हैं, ये हमने क्लासेस में भी करा होता है, और किस तरीके से अप्रोच किया जाता है इन क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, सबसे बड़े नंबर्स आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सबसे बड़े नंबर्स मेरे को 25 28 यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना? 25 28 53, इन दोनों का सम 53 है। 53 में कितना ऐड करूं ताकि 82 आ जाए? 29। मतलब मुझे पता चला के और एल को ऐड करके 29 आना चाहिए, 29 आना चाहिए। अब जो हमारे पास नंबर्स हैं 13 से लेके 28 तक, उनमें 29 किन दो नंबर्स का सम बनेगा? किन दो नंबर्स का सम बनेगा? देखो 16 13 ये पहले से फिल्ड है, तो वो हम दोबारा फिल नहीं करेंगे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। 25 28, तो हमारे पास जो अवेलेबल नंबर्स हैं उसमें 14 और 15 ही एक ऐसा पेयर है जिसमें 29 सम बने। तो हमें पता है के की वैल्यू या तो 14 होगी या फिर 15 होगी, और के की वैल्यू 14 है तो एल की वैल्यू 15 हो जाएगी, और के की वैल्यू 15 है तो एल की वैल्यू 14 हो जाएगी। ठीक है, तो ये केसेस अभी हमारे पास बनेंगे। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हमने देखा सबसे बड़े नंबर्स हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? 25 28, तो के प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी? 29। 29 सिर्फ एक ही पेयर से बन सकता है, 14 15। जैसे हमने सबसे बड़े नंबर्स यहाँ पे देखे, सबसे छोटे नंबर भी देखते हैं कहाँ पर हमें दिख रहे हैं। कहाँ पर दिख रहे हैं? हमें 13 एंड 16 दिखाई दे रहे हैं, 13 एंड 16। 13 एंड 16 कितना होता है ऐड करके? 29। 29 में कितना ऐड करें 82 आने के लिए? 53। अब 53 वाला कौन सा पेयर है बताओ? 26 एंड 27 ही है, इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं है जिसमें 53 सम बन सके। तो मतलब यहाँ पे अगर 26 है तो यहाँ पे 27 होगा, और अगर इधर 27 है तो इधर 26 होगा। मतलब ए बी की वैल्यू हमें डेफिनेटली पता है कि यही आएंगी। तो मैं 26 27 कट कर देता हूँ, 14 15 भी कट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमें पता है कि इधर ही आने वाले हैं। राइट। अब डी प्लस आई भी हमें पता था कितना था? 41 था। ओके, 41 था। ओके, ई की वैल्यू हमें पता है 19 है। अब डी प्लस आई इज 41। 41 बनाने के लिए हमारे पास काफी सारे केसेस हैं। 20 and 21 is 41, 19 and 22 is 41, 18 and 23 is 41, 17 and 24 is 41। तो काफी सारे केसेस अभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे करें इसको प्रोसीड? तो देखो कैसे करना है। यहाँ पर अब हमें केसेस लेने पड़ेंगे। केसेस लेने पड़ेंगे कैसे, समझते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 26 मान लूं कि यहाँ 26 है, ए के प्लेस पे 26 है, तो यहाँ पे या तो 14 हो सकता है या फिर 15 हो सकता है। या तो यहाँ पर 14 हो सकता है या फिर 15 हो सकता है। ठीक है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार क्या ले रहा हूँ केस की, अगर ये 14 हो तो क्या होगा? अगर ये 14 हो, 26 के साथ 14 हो, तो कितना हो गया? 40। 40 में 42 ऐड करने पे बनेगा, है ना? 42 में 42 ऐड करने पे बनेगा 82। तो एक वैल्यू हो जाएगी 20, एक वैल्यू हो जाएगी 22, है ना? एक वैल्यू हो जाएगी 20, एक वैल्यू हो जाएगी 22, 22, और यहाँ पे 22 और 20, है ना? ऐसा बन जाएगा। या फिर क्या हो सकता है? 42 बनाने का और कौन सा केस यहाँ पे मेरे को दिख रहा है? 42 बनाने के लिए 24 एंड 18 भी दिखाई दे रहा है।
24 एंड 18 भी दिख रहे हैं ना। एक और केस मुझे दिख रहा है यहाँ पर 23 के साथ 19 भी दिख रहा है, बट 19 इज ऑलरेडी यूज, तो 19 को भी हम कट कर देते हैं। बाय द वे 19 को भी हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे 26 है, यहाँ पे अगर 26 है तो इधर क्या आएगा, 27 आएगा, इधर 27। अब 27 के साथ 19 तो है ही है, और यहाँ पे हमने अभी 14 ट्राई करा है, ठीक है, तो यहाँ पे 15 होगा। हम देख रहे हैं कि कौन सा केस यहाँ सेटिस्फाई करेगा जिससे हम आगे प्रोसीड कर पाए, ठीक है। वैसे चलो आगे देखते हैं। 27 एंड 19 इज 46, 46 एंड 15 इज 61, 61, 61 अगर यहाँ पे है तो यहाँ क्या होगा, 21, ठीक है, 21। तो ये ऐसे बन जाएगा हमारे पास 82। ओके, एक बार देखो, 27 एंड 19 इज 46, 46 एंड 15 इज 61, 61 एंड 21 इज 82। तो अभी तक करेक्ट है। अब आप डायगनली चेक करो, डायगनली है ना, 13 डी आई एंड 28। तो डी प्लस आई कितना होना था, 41 होना था। डी प्लस आई वॉज 41, डी प्लस आई 41 हमने लिखा हुआ है। तो डी प्लस आई अगर 41 है तो यहाँ पे 20 और 21 ही आएंगे, तभी 41 बनेगा। यहाँ 20 हो गया तो यहाँ 22 हो जाएगा। अभी तक सब कुछ सही लग रहा है, देखो यहाँ 26 हो गया। अगर ये केस गलत होता तो 26 के साथ मैं 15 ट्राई करता, ठीक है, 26 के साथ 15 ट्राई करता, फिर वो भी गलत होता तो एक प्लेस पे फिर 27 ही आता। अभी तक इस केस में कुछ भी गलती नहीं है, ठीक है। दिस इज योर केस राइट नाउ। कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश प्लीज? ओके, सो Venkat, yeah, so I'll be speaking in English after this. So we have got the values of A, D, H, and K, and similarly for B, E, H, I, and L. So the sum that we had to make was 82. Currently, we are getting 82 from this diagonal. Let's see this diagonal. This diagonal. Are we getting 82 or not? Yes. 25 and 16 was 41. 41 and 19 is 60. 60 and 22 is 82. So from both the diagonals, we are getting sum as 82. Okay. So how to proceed further now? Let's look at first column, 13, C, G, and 25. 13, C, G, and 25. So C plus G has to be 44. C plus D has to be 44. From the remaining numbers that we have, how can we make 44? How can we make 44? For 44, we need 20 and 24. For making 24, for making 44, we need 20 and 24. Or we can also take 21 and 23. But both the cases here are not possible. Why? Because 21 and 23 we cannot take, since 21 is already used, and 20 and 24 is can also not be used because 20 is already used here. So we cannot make sum 44 here if we take this case. So इससे हमें पता चला that the case that we have made is wrong, because we cannot proceed further with this case. So we have to erase the case that we have made. Right. So let's take the other case then. Let's take the other case then. Let's try 26, 15 here and 14 here. Okay. So let's see. If we look at B, E, I, and L, 27 and 19 is 46, 46 and 14 is 60, 60 and 22 will be 82. Okay. Now, if we look at this diagonal 13, D, I, and 28. So 13 and 22 is 35, 35 and 23 is 69. Sorry, this is 35 and 28 is 63, 63 and 19. Now this will also be wrong. Why this is wrong? Because 19 is already there. You cannot fill 19 again. Okay. That means the value of A cannot be 26. Why? Because we have tried
26, the value of A as 26, and we have tried K as 14 and 15, both the cases है ना, हमने दोनों cases try करे. So A cannot be 26. So the other case that we were getting was if A is 27, this can be 14 or 15. So let's try 14 here, and it will be 26 and 15. Let's try this case. Okay, so BEIL, 26 and 19 is 45, 45 and 15 is 60, 60 and 22 is 82. Okay, let's look at this diagonal now. 13 DI and 28. 13 and 28 is 41, 41 is 22 is 63, and this is 19. Okay, up till now this is correct. So let's look at this diagonal ADH and K. 27 and 19 is 46, 46 and 14 is 46 and 14 is 60. So this will be 22, and once again the value is getting repeated. Okay, so this is not the case here. That means we are very sure. That means we are very sure that K will be 15. K will be 15, and this was 19 here. Now this is correct. Okay, let's try. 26 and 19 is 45, 45 and 14 is 59, 59 and 23 is 82. Okay, so this has to be 18 because the diagonal also has to be 82. Now look at this second column, A, D, H and K. 27 and 18 is 45, 45 and 15 is 60, 60 and 22 is 82. Okay, so now this is correct. Now this is correct. Okay, you can look at both the diagonals. The sum is 82. The sum of both the columns is also 82. So we can proceed further now. Since we have used 18 and 22, let's eliminate this. And I've used 23 as well, so I will not use that again. Right, so these are the remaining numbers that are needed to be used. Now if you look at first column, 13, C, G and 25, if since the sum is 82, C plus G has to be 44. Now, from the remaining digits, that remaining numbers that we are left with, 20 and 24 is the only pair that comes out to be 44 in sum. 20 and 24. Okay, so if this is 20, this will be 24. If this is 24, this will be 20. Okay, if this is 20, this will be 24. If this is C is 24, then G will be 20. Let's look at the same thing for the last column. 16 and 28 is 44. 44 and 38 is 82. So F plus J has to be 38. Which are the remaining numbers that we have? 17 and 21. So if this is 17, this will be 21. If this is 21, this will be 17. Okay. Now let's look at the sum of both the rows. Okay, the sum of this row has to be 82 as well. So 18 and 19 is 37. 37. 37. So to make the sum 82, we need to add 45 in it. 45. So C plus F has to be 45. C plus F has to be 45. For C plus F has to be 45, this number has to be 24 and this number has to be 21. Okay, correct. So if this is 24, this will be 20. And if this is 20 and this is 21, so this cannot be 21, this will be 17. Right. So you can see now we are getting a matrix of 4 cross 4 in which the sum of all the rows is 82. The sum of every column is also 42 and sum of every diagonal is also 42. So this is magic square. Right. तो ऐसे ग्रिड में जिसमें हर जगह से सम सेम है उसको हम मैजिक स्क्वायर बोलते हैं. So we are able to identify all the values here. We had to make a lot of cases and this is very natural in CAT exam जहाँ पे आपको काफी cases बनाने पड़ते हैं. Okay, so let's go to the question and let's answer them. First question. How many numbers in the given matrix are numerically greater than the number denoted by C? So C, what is the value of C? Let's see. C is 24. C is 24.
Since C is 24, how many values are greater than C that we were filling here? 25, 26, 27, 28, 4 values. We can find the numerical value of A plus I minus B plus H. Okay, so let's look at the values. A plus I, A 27 and 23. 27 and 23 minus B plus H. So let's look at the value of B and H. 26 and 22. 26 and 22. Okay. So this is 50 and 48. 50 and 48, the difference is 2. Okay, so this is your answer. The next question, if we were to construct another 4 by 4 square matrix containing 16 consecutive natural numbers having the same property as the given above, then which of the following can be the sum of the numbers of any of the boxes of one row? Okay. Okay. So if we want to find the sum of one row, this has to be a multiple of 16. The number has to be a multiple of 16. Why? Why we need to get the number as multiple of 16? Let me tell you. Since we are adding 16 numbers here, 16 numbers here, the average comes out to be sum upon 16. Okay, since we are adding 16 numbers, है ना? So the number has to be the average has to be an integer value, which is so sum has to be a multiple of 16. ठीक है? So from that we can find out. So if whether this number is multiple of 16 or not, let's see. 16 से इसको cut करें तो this is not divisible by 16. This is also not divisible by 16. This is also not divisible by 16. This is divisible by 16. Right? So this is your answer. I'm leaving the last question for you guys. Try and tell me the answer in comments. So let's go to the next question. This again came in CAT around 2004, 2005. A very good set where we have to analyze a lot of things. Let's read this. For admission to various affiliated colleges, our university conducts a written test with 4 different sections, each with a maximum of 50 marks. The following table gives the aggregate as well as sectional cutoff marks given by 6 different colleges affiliated to the university. A student will get admission only if he gets marks greater than or equal to cutoff marks in each of the section, and his aggregate marks are at least equal to the aggregate cutoff marks as specified by the college. Okay. So these are 6 colleges, college 1 to college 6. These are like IMs. Just like we have a lot of IMs, there are a lot of colleges here. So when an IM call you for interview, they look at your aggregate score and they look at your sectional score as well. Right. So similarly in college 1, if somebody wants to get an admission, his aggregate score should be equal or more than 176. His score in section A should be equal or more than 42. In section B, equal or more than 42. Section C, equal or more than 42. And section D, they are not looking at the score of section D. So if there is no score in any of the section, that means this college is not bothered about section D score. So college 1 को फर्क नहीं पड़ता कि section D में क्या score है. So college 2 is not bothered about your score in section A and section D. They will only look at the score of section B, section C and aggregate. All the sections are of 50 marks. All the sections are of 50 marks. And let's go to the question now. So we have 3 questions on this set. Let's try to solve this. First question says, Aditya did not get a call from even a single college. Aditya को कहीं से call नहीं आया. What could be the maximum aggregate marks obtained by him? What could be the maximum aggregate marks obtained by him? So if somebody is not getting call from even a single college, what can be his maximum aggregate marks? Okay. So if somebody is not getting call from even a single college, what can be his maximum aggregate marks? Let's see.
So we need to create a scenario in which somebody will not get even a single call, but that aggregate score should be maximum. So how to proceed? We need to look at column in which there are maximum entries filled. So in section A, 3 entries are there. Section B, 3 entries are there. Section C, there are 4 entries. So if somebody gets, let's say, if somebody gets 42 marks in this section, if somebody gets 42 marks in this section, he will not get call from college 5. He will not get call from college 3, not a call from college 2, and not a call from college 1. Uh, okay, he'll get a call from college 1, so let's make it 41. Okay, 41. If somebody scores 41 marks in section C, he'll not get call from college 5, 3, 2 and 1. ठीक है, तो 4 कॉलेज से कॉल नहीं आएगा. अब हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि कॉलेज 4 और कॉलेज 6 से भी कॉल ना आए. So we have to create a scenario in which we are not getting call from even college 4 and college 6. College 4 and college 6 की कट ऑफ कहाँ पर है? इधर. So if somebody gets 43 marks in this section, he'll not get call from this college, he'll go not get call from this college. Okay. Now we need to maximize this score. We need to maximize this score. तो बाकी sections में क्या करते हैं? 50-50 marks. So aggregate will be 184. Aggregate will be 184. So even if somebody gets 184 marks, he'll not get call from even a single college. Okay. Even a single college. Right. Let me zoom out this table a bit so that you're able to see what I have written here. Just give me a second. Okay. So I was saying that if somebody gets even 184 marks, he'll not get call from even a single college. So in section C, if he gets 41, in section D, if he gets 43, and since I have to maximize the score in section A and section B, I can assume that he is scoring 50 marks. So if he gets 184 marks, still he will not get call even from a single college because he is not clearing the sectional cutoff. So this will be your answer for this question, 184. Okay, next question. Bhama got call from all the colleges. What could be the minimum aggregate marks scored by her? So if somebody is getting call from all the colleges, what can be his minimum aggregate marks? Okay. So now we have to create a scenario in which the student should get call from every single college, but his aggregate score should be minimum possible. Okay, so let's see. In section A, what is the minimum score that I need to achieve so that I get call from all the colleges? This is 42. 42. Okay. In section, 42, 45, right? 45. Because if I want to get call from all the colleges, at least I need to score 45 in this section. Similarly, if I want to get call from all the single colleges in section B, I need to score 45, at least 45 marks in this section. Because if I score 45, this college will call me, this college will call me, this college will also call me. In section C, at least I will have to score 46. And in section D, I will have to score 45. So let's look at all the sum. 181. So if somebody gets 181, even the aggregate cutoff is also cleared. So 181 is the minimum aggregate at which any student will get all calls. Right? So this will be your answer, 181. 181 is the answer to next question. So we have
Uh, we have next question in front of us. Thank you, Vicky. So Charlie got called from two colleges. What could be the minimum marks obtained by him in a section? Charlie got called from two colleges. What could be minimum marks obtained by him in a section? Since CAT is very far right now, so a lot of students are not that serious right now. But since the video will be there on YouTube, you can look at it later and look at all the solutions. That will help you a lot. But before looking at the solution, you guys have to solve that set first and then look at the solution. Then it will help you a lot. So Charlie got called from two colleges. What could be the minimum marks obtained by him in a section? तो चार्ली को सिर्फ दो ही कॉलेजेस से कॉल आ रहा है. उसके किसी भी सेक्शन में मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं? तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो मिनिमम एग्रीगेट कौन से दो कॉलेजेस का है. These two colleges have minimum aggregate score required. So अगर मैं स्कोर 175 ही लेके आऊं, लेट्स से आई एम द स्टूडेंट और मेरा स्कोर 175 आता है, तो ये कॉलेजेस मुझे कॉल नहीं करेंगे. दीज कॉलेजेस विल नॉट कॉल मी एट ऑल. सो वन वे टू लुक एट दिस क्वेश्चन इज दैट I need to score only 175 marks and I need to minimize my score in one of the section.